हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फार्मेसी स्टडी। तो हम आज देखेंगे हमारे वाई स्टडी में कि बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री कैन बी सब डिवाइडेड थ्री प्रिंसिपल्स। बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले क्या होती है हम देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट कैन डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शंस। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी बॉडी में, हमें बायोकेमिस्ट्री में इसे ही पढ़ना है। इसमें होता है हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर केमिस्ट्री। इस ये क्या है, डिटरमाइंस मॉलिक्यूलर जियोमेट्री, कॉन्फिगरेशन, डायनामिकल स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, describe all chemical reactions involved in maintaining the living state of the cells and the organism. Molecular genetics, the chemistry of process and substance that store and transmit biological information. Therapeutics, introduction to pathology of blood and urine. Blood related, lymphocyte and platelet, their role in health and disease. Erythrocyte, abnormal cells and their significance. Urine related, abnormal constituent of urine and their significance in disease. इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले सेल देखेंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एंड बायोलॉजिकल यूनिट of all known living organisms. The cell is the fundamental unit of the life, also called a building block of life. Cells are composed of small molecule, micromolecule organelles. Prokaryotes. A prokaryote is a unicellular organism that lacks a membrane-bound nucleus. Mitochondria are or any other membrane-bound organelles. Amoeba. ये अमेबा का डायग्राम है। यूकेरियोट सेल, these are organisms whose cells have a nucleus enclosed within membrane. Animal cells and plant cells, chloroplast and cell wall। ये उसके डायग्राम है। बायोकेमिकल कंपाउंड्स, ये होते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिज्म से आता है सेल से में होता है बायोकेमिकल कंपाउंड्स डिवाइडेड होते हैं। सब हम देखेंगे, पहला वाटर में जाएगा, फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन आयंस, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होता है। लिपिड क्या होता है, मेम्ब्रेन्स होती है, मेम्ब्रेन्स में स्टोर होता है एंड हार्मोन्स होते हैं कुछ। प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल मूवमेंट्स, सिग्नल रिसेप्टर्स, हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब वर्क करता है। एंड न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, डीएनए एंड इन्फॉर्मेशन कैरियर्स, एमआरएनए, इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेटर यानी ट्रांसफर आरएनए। बायोकेमिस्ट्री एंड लाइफ, ये एक साइकिल है, बोला जाए तो एक चार्ट है, आप इसे देख लीजिएगा। The chemicals of life. Water. All life form contain water. Organic compounds. Nucleic acid, proteins, carbohydrate, fats, lipid. Inorganic elements, bulk elements, sodium, nitrogen, magnesium, phosphate, sulfate, chlorine, calcium. Trace elements, इसमें आएगा आयरन, जिंक, आयोडीन। बायोकेमिस्ट्री इन लाइफ, एक्सेप्ट for water, most of the molecules found in the cells or micromolecules can be classified into 4 different categories: carbohydrate, protein, fat, nucleic acid। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट like lipid contain a carbon backbones, but they also contain many polar hydroxyl groups and therefore very soluble in water. A biomolecules consisting of carbon, hydrogen and oxygen
atoms, usually with a hydrogen oxygen atoms ratio of 2:1. Empirical formula: CnH2ON. Starch and sugars are the most important carbohydrates in the human diet. Serve for the storage of energy, play key role in the immune system, fertilization, preventing pathogenesis, blood clotting, development. ये कार्बोहाइड्रेट के साइकिल है. कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स होता है हमारा पॉलीसेकेराइड्स. पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, फाइबर एंड ग्लाइकोजन आएंगे. सिंपल में आएगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड. मोनोसेकेराइड होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड डाइसेकेराइड होता है माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. कार्बोहाइड्रेट्स, इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा. प्रोटीन रिच फूड, इसमें प्रोटीन की रिच फूड है, जैसे हमारा हो गया नॉन वेज में फिश, एग, मीट, डेयरी फूड. एंड वेज में आ गया स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, पीश, बनाना. एंड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स macromolecules of every cell in the body. They are composed of linear polymers called polypeptide, which contain amino acids connected by peptide bonds. 20 amino acids are commonly found in protein. These 20 amino acids are linked together through peptide bonds, forming peptides and proteins. What's the difference? The chain containing less than 50 amino acids are called peptides, while those containing greater than 50 amino acids are called proteins. Is N2 build and repair tissue? Protein import Protein important building block of bone, muscle, cartilage, skin, and blood. Serve as a fuel source. It provide a much energy density as carbohydrate. Amino acids are the building units of proteins. Proteins are polymers of amino acids linked together by what is called peptide bonds. There are about 300 amino acids occur in nature. Only 20 of them occurs in proteins. Structure of amino acids. Each amino acid has four different groups attached to alpha carbons, which is carbon atoms next of COH. These four groups are amino groups, COH groups, hydrogen atoms and side chains are. ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा. Foods high in fat, fatty meats and fish, cheese, butter, avocado, nuts and seeds, chocolate. Lipid. Lipids are primary hydrocarbon structure. A lipid is a biomolecule that is soluble in non-polar solvent, formed mainly from alcohol and fatty acids combined together by ester linkage. The functions of lipid includes storing energy, signaling, and acting as structural components of cell membranes. Lipids have applications in the cosmetic and food industries as well as in nanotechnology. लिपिड्स का स्ट्रक्चर है, इसमें है सिंपल और स्टोरेज. लिपिड में आएगा नेचुरल फैट्स, वैक्सेस, एंड सेकेंड आएगा कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स. इसमें आएगा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स एंड है डेरिवेटिव लिपिड्स. इसका स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है. विटामिन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होता है, विटामिन बी ग्रुप एंड विटामिन सी ग्रुप. एंड फैट सॉल्युबल होता है विटामिन ए, डी, ई, के. ये इसका स्ट्रक्चर है. ओके, थैंक यू.